We are here with Vion and Ziz, one of the best organized, summit, and I'm very happy to see here in Colombo. It's so beautifully arranged program. आज हम जी मीडिया के माध्यम से इस जी इनोवेशन एंड लीडरशिप प्रोग्राम के तहत बहुत अच्छा लगा कि हमको डिफरेंट डिफरेंट लोगों से मिलने का मौका मिला और हम उनके साथ आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि हम लोग कैसे अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं इंडिया के बाहर भी, है ना। और यहाँ पे श्रीलंका में आके हम लोग अभी देख रहे हैं कि यहाँ पे जो जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं सब कहीं ना कहीं इनोवेशन में लगे हुए हैं, तो हम लोग भी उसी दिशा में अपने को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्ते फ्रॉम श्रीलंका। आज हम आ गए हैं श्रीलंका में कोलंबो के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित मंदिर गंगा रामैया मंदिर में, जहां पर कई सारी संस्कृतियों का मिश्रण मिलता है। तो आइए मेरे साथ मंदिर के अंदर चलिए। आज जी न्यूज़ को मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जिस तरीके से विश्व के मैप पर भारत को और श्रीलंका को एक साथ दिखाया जाता है, वैसे ही जी न्यूज़ के इस प्रोग्राम ने भारत और श्रीलंका को एक साथ फिर दोबारा से जोड़ दिया है। तो बीरा झील के पास स्थित ये मंदिर सिर्फ आस्था के हिसाब से एक प्रमुख केंद्र से नहीं कहा जा सकता, बल्कि पर्यटन का भी एक बहुत बड़ा केंद्र है। आज मैं मौजूद हूँ कोलंबो में आइकॉनिक इंडिपेंडेंस स्क्वायर में। ये वो जगह है जहाँ इतिहास आज भी मजबूती से खड़ा है। इसीलिए अब आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको जो सबसे बड़ी ऐतिहासिक धरोहर है वो आज दिखाती हूँ। Very exciting to be part of Z Media Global Innovation and Leadership Summit. I think this is the first event we are being part of, and we are very excited to be here. जी न्यूज़ की ओर से सबको धन्यवाद। जी न्यूज़ ने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया है आने के लिए। कंपनी का नाम है हमारा सस्टेनेबल एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, जहाँ पे हम लोग एआई बेस में फ्री ऑफ कॉस्ट में सब बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं विदाउट एनी चार्जेस। यहाँ से आपका फ्यूचर गोल क्या है? हमारा फ्यूचर गोल ये है कि वर्ल्ड वाइड और ग्लोबली हमें स्प्रेड होना है और हर एक जगह पे पहुंचना है। जस्ट बिकॉज हम अभी श्रीलंका टूर के लिए आ गए हैं, इसी तरह हम धीरे धीरे वर्ल्ड वाइड ग्लोबली हर जगह फैलने चाहिए। श्रीलंका ने अपनी इस धरोहर को बहुत ऐतिहासिक तौर पर आज भी उतनी ही खूबसूरती के साथ संभाल कर रखा है। और ये जो खंबे 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 आप देख रहे हैं, यही इस जगह की पहचान है। मैं आपको बता दूं, जब लोग यहाँ पर आते हैं तो श्रीलंका के पहले प्रधानमंत्री को भी यहीं से याद किया जाता है। ये जो आपका समिट इनोवेशन एंड ग्लोबल जो समिट बनाया है, ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म साबित होगा जी मीडिया के माध्यम से दुनिया को एक अच्छा मैसेज देने के लिए कि भारत से हम लोग बहुत कुछ इन्वेस्टमेंट या एक तरीके से बहुत कुछ देने के लिए हमारे पास है, और दुनिया उसके लिए कहीं ना कहीं भारत का नाम आगे बढ़ेगा। मैं ऐसा मानता हूँ कि श्रीलंका वैसे देखो तो अंडर वैल्यूड है एज फार एज टूरिज्म इज कंसर्न, क्योंकि श्रीलंका इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री, इज़ अ कोस्टल एरिया। और मुझे लगा कि नॉर्थन एरिया है कोस्टल एरिया, वो एक वर्जिन रह चुका है, तो मैं आई एम ऑल्सो टॉइंग विद एन आइडिया कि वहाँ एक बहुत अच्छा रिसोर्ट किया जाए। Feeling very excited because this is a complete tour where people are exploring the local cities, and there is an event which is also planned here. So we have nominated ourselves in the financial market intermediary and hope for the best. Let's see that how things go on. I am very thrilled to be part of this our journey in Sri Lanka, यहाँ पे इतना बढ़िया बिजनेस कम्युनिटी को प्लेटफॉर्म ये मिला है। वी हैव सो मेनी डिफरेंट वर्टिकल्स ऑफ द बिजनेस कमिंग टुगेदर। हर सेगमेंट के यहाँ लोग मिल रहे हैं। रियल स्टेट हो गया, मेडिकल फील्ड हो गई। I congratulate to G Media and thank you very much for giving us the opportunity. वायर हाउसिंग और ये अपना कार मैन्युफैक्चरिंग, सो ऑल अभी ग्रोइंग इंडिया में बहुत हो रहा है, तो हम लोग उसका एक स्पेशल जॉब कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग जी मीडिया को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ।
जी न्यूज़ के समिट में आज हमारा दूसरा दिन है और हमें अभी यहाँ पे 2 दिन और रुकना है और टीम जो हमारे साथ जी न्यूज़ की है ये काफ़ी कोऑपरेटिव है, काफ़ी सपोर्टिव है, काफ़ी एक्साइटिंग जर्नी अभी तक 2 दिन की चल रही है। Really, this is a global leadership summit. G Media is doing very great initiative and given us opportunity to explore the world. Just like it's a great destination, Sri Lanka, Colombo. I am so much excited. आज जी मीडिया में कोलंबो लेके आया है और यहाँ बड़ा लीडरशिप इनोवेशंस प्रोग्राम कर रहे हैं। Good morning, everyone. My name is Lavina Raj, and a very warm welcome to the 5th edition of the Z Media and Beyond Global Innovation and Leadership Summit. Very warm welcome again to all of you all. My name is Shivan Chandna. I'm a broadcast anchor and a core team member with Beyond World is One News. Thank you so much. Let's please have a loud round of applause for ourselves. This is a beautiful place, lovely country, and very happy to be here. And about this conclave, about this event, this summit has traveled across global powerhouses from London to Mauritius and then China to Vietnam. And the 5th edition of the summit is right here in Colombo. We have with us a highly respected and primary voice in Sri Lankan politics, known for his perspective on economic revival and governance. We've interacted over the broadcast a few times in the past, sir. Very happy to have you here with us in person. Please join in your hands and welcome Sri Lanka's Leader of Opposition, Member of Parliament, Mr. Sajith Premadasa. Sir, please. Please come on stage. Thank you so much for giving us your time, sir. Distinguished guests, leadership of Z Media and beyond, eminent entrepreneurs, and the brilliant business minds who have traveled from across India to join us today. Welcome to Sri Lanka and welcome to Colombo. It is a powerful testament to the enduring, unbreakable bond between our two great nations. We gather at a moment of profound historical transformation. Now turn to a discussion on skill development and focusing on how capability building is shaping future-ready talent and economics. And for this, we'd now like to invite Mr. Dinesh Victor, founder and managing director, SIP Academy India Private Limited. I want to speak to you about something very relevant for each of you, which is about global competitiveness and skill development. Now, I just want to ask you a very simple question, and this is true for many of you who are part of large organizations. What is it that makes your organization competitive or your nation competitive? What is the key to make your company very competitive? Skill, exactly. So many people would say, investment, I need money. That was true a few years back. Money may have been very important because we had lack of money. Or people would say technology, but you could buy technology today. But actually, all of you would realize the single biggest challenge that many of you run to grow your business larger or make your nation better is the lack of skills in your team. And that's really what makes an organization more competitive. It's really not money. It's really not technology. It's really about how good and how, I would say, broadly, how smart your people are, how competent your people are. And that's a big, huge gap between what we want and what we get. We would now like to invite our CEO, Mr. Raktim Das, whose leadership continues to guide and strengthen the organization's vision and growth. Good evening, everyone. Mr. Hanif Yusuf, Government of the Western Province and Special Envoy of the President for Foreign Investment. Mr. Chaturanga Abhay Singh, Deputy Minister for Industry and Entrepreneurship Development. Professor Ruwan Chaminda Rana Singh, Deputy Minister of Tourism. Mr. Santosh Jha, Indian High Commissioner to Sri Lanka. Esteemed guests and delegates from India. Ayubovan, Namaskar.
It is indeed a pleasure for all of us to be here in this beautiful island nation, a country which we have always felt has connected various countries from across the world, connected worlds, as well as whose shores have welcomed ideas, culture, and commerce. As many of you would perhaps be aware, Zee pioneered the media and entertainment industry in India almost 30 years back. Zee News is the first ever private news broadcaster in the country. And today, as I speak, as part of Zee Media Corporation Limited, we have over 19 news channels and about 32 digital properties. We are by far the largest news network in the country, and as I have already mentioned, we are the first news media network in the country. We're going to now be giving out the first round of felicitations, and for that I'll again request our CEO Zee Media, Ratim Das sir. Sir, please join us on stage for the first round of felicitations for all our guests who are here with us. Mr. Manish Chaturvedi, founder and MD, Indus Strategy Financial Advisor, and the category is for Impact Leader in Business and Investment Strategy. We next call upon Mr. Vivek Singh, Managing Director, Minds Lab Publishing. Now I would request Mr. Sanjeev Agrawal, Chairman of Sage Group. Next is Dr. Kumar Prashant, Director, Jaya Siddhartha Hospital, for Lifetime Achievement Honor for Excellence in Critical Healthcare. Next, we would request Mr. Rohit Jain, who is the Director of RRR Infra Developers. Next is Mr. Rajesh Jain, Director, KGK Realty India Limited, for Excellence in Real Estate Sector. On his behalf, Rashmi Dharwal and Pushpendra Singh would be receiving the award. Let's move forward. Now, I would like to request Dr. G. Shanmuga Raja, Managing Director of Rightway Health International Private Limited. And on his behalf, Gaji Yokesh Shunmuga will be receiving the award for Inspiring Mentor in Direct Selling Industry. Next, Mr. Vishwajit Datta, who is VC of Techno Global University, Sironj. Being awarded for excellence in the education sector. Next, we call upon Mr. Prakash Rijal, Founder, MIPA Industries. Now, I would like to request Mr. Ravi Singhal, who is the Director and CEO of GCL Broking. Next, we'd like to call Simrat Kathuria, Proprietor and Founder, The Diet Experts. All right, we'd now like to call Dr. K. Srinivas Rao, Managing Director, Amtech Technologies India Private Limited. Next, we request Mr. Pradeep Singh, Director of SKM Contractor and Services Private Limited. And finally, we'd like to call upon Dr. Avinash Singh Chauhan, Managing Director, Shivaya Hospital. And we'd now like to also felicitate Governor Yusuf. And we are now joined by Chaturanga Abesinghe, Deputy Minister of Industry and Entrepreneurship Development, Member of Parliament. So let's call him. Mr. M.K. Bhatia, Chairman and Founder, MITS Healthcare Private Limited. Next, we would request Mr. Rahul Timbadia, who is the Founder and Managing Director of Latim Metal and Industries Limited and Sajutas Limited. Next, we'd like to call upon Mohammad Salim Jafri, MD, Asma Builders and Colonizer Limited, Bilaspur. Yeah, Mr. Rakesh Jain, Managing Director, Design India Advertising Limited. Now I request Mr. Hari Nair, who is the CEO of RNA Builders NG. Mr. Pradeep Chandanan, MD, Inhibio Water Solution and Technologies. Can we have Mr. Sushil Kumar Agrawal, who is the Chairman of Agro Recycling Limited?
Next, Mr. Uttam Sinha, Founder, Director, Cosmosign Creative Solutions Private Limited. Now I would like to request Mr. Mukesh Pandit, who is the Managing Director of Anjali Floor Concrete Solution Private Limited. And finally, we have Dr. Sumit Ranawat, CEO and Founder, SASI Global Education Private Limited. Thank you so much. And Mr. Abhisenge, please stay with us. We'd like to honor you for making time for us, for being here with us. Please, if we can have the memento as we honor. Please give a big round of applause. Thank you so much for giving us your time today. Now welcome Professor Ruban Chaminda Ranasinghe, Deputy Minister of Tourism, Sri Lanka. We now begin with the next round of felicitations. We'll start by honoring the Grand Legacy Resort and Spa, Mahabaleshwar, the organization that will be joining us here on stage. We would like to call our CRO, Manish Seth. Sir, please come on the stage. Dr. Arpit Chopra Jain, Critical Disease Specialist and MD, Arogya Super Specialty Modern Homeopathy Clinic. We now call upon Miss Vaishali Junarkar, Teacher, Balasaheb Bharde School. And finally, we'd like to call upon Mr. Deepak Kumar, Director, Homily Construction, Ranchi, Jharkhand. And Professor Ranasinghe, thank you so much for joining us here on our summit, and would like to honor you. G Media organized the international summit in Sri Lanka, and I'm one of the participants for it. I'm really honored by the award given by the G Media, and it is very important in my life, because I work very hard in the hospitality business, and the G Media appreciate my work and give me the Best Excellency Award of India. Thank you very much. Experience with the Z is very enriching, very enlightening, and very insightful. There were a lot of discussions that happened on the India-Sri Lanka relationships, though as a lot of people say, there are a lot of common things, be it civilization, traditions, like India and Sri Lanka are like twins. And the global positioning of Sri Lanka is very important with the current ongoing situations and times to come. Sri Lanka is surely going to be a country to watch for all the investment sectors. बेसिकली हम लोग फार्मर को हेल्प करते हैं वाटर हार्वेस्टिंग करके इरिगेशन करने के लिए. प्रोटेक्टिव फार्मिंग में हम लोग काम कर रहे हैं और काफ़ी फार्मिंग रिलेटेड प्रोडक्ट बनाते हैं. हम लोग का बेसिकली जो इरिगेशन के लिए फार्मर को जो प्रॉब्लम होता है, पानी नहीं रहता है, वो हम सॉल्व करते हैं. हम लोग पोन लाइनिंग बनाते हैं, उसमें पानी जमा करके फार्मर अराउंड द ईयर फार्मिंग कर सकता है. Z and Vion have organized such a wonderful evening today. It's a global summit. I could meet fantastic people from both the countries, like our High Commissioner here and many ministers here in local. And I have been awarded one of the best CEOs award here in this summit. आज हम लोग यहाँ पर जी मीडिया के माध्यम से इंडिया श्रीलंका बिजनेस समिट में आए हुए हैं. इस समिट में आकर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है. यहाँ पर कई सारे लोगों से मिलना, उनकी बातें सुनना, यहाँ के मिनिस्टर्स को समझना, वो सब कुछ देखा. और यहाँ पर जिस तरह से मुझे फैसिलिटेट किया गया, उसके लिए मैं बहुत बहुत जी मीडिया का धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ ऐसे आयोजन आगे भी भविष्य में होते रहें और हम लोग इस तरह से गौरवान्वित होते रहें. Amazing to be here at Colombo in this Z Media and Vion Global Innovation and Leadership Summit. I am Manish Chaturvedi, founder and MD of Indus Strategy. We are global financial platforms for investments, capital markets, mergers, acquisitions, private equity, wealth management. We are present globally in various financial centers from United States, Europe, Middle East, Mauritius, Singapore, and headquartered in India. It's privileged to be part here in this part of the world. सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूँगा जी मीडिया को और WION वर्ल्ड इज वन
मैं भी यही मानता हूँ कि वर्ल्ड इज वन, एक ही गॉड है और एक ही वर्ल्ड है ना। तो मैं थैंक्स करना चाहता हूँ कि जी मीडिया ने मुझे इनवाइट किया ग्लोबल इनोवेशन एंड लीडरशिप समिट में, और आप सबका, आपकी टीम का, कि हम लोग भी यूथ के लिए कुछ काम कर रहे हैं। मेरा फार्मास्यूटिकल बिजनेस है, हमारी कॉस्मेटिक्स की कंपनी है, एंड आप सबने सुना होगा एक ही कंपनी है जो पंचकुला की, जो कारें बांटती है अपने एम्प्लॉयज को। अपने तो सिर्फ अपने होते हैं और सपने भी सिर्फ अपने होते हैं।